So starting with the chapter number system, what we are going to study is we are going to study the types of numbers. What are the types of numbers that we have? Natural numbers, whole numbers, and integers. Natural numbers are 1, 2, 3, and 4. They're not going to start from 0. Whereas whole numbers are going to start from 0, 1, 2, 3, 4. To remember that 0 comes in whole numbers, what we are going to do is whole, it is saying. Whole means complete. So all numbers, all possible numbers starting from 0, 1, 2, 3 will fall under the category of whole numbers. Then we have integers. Integers are the set of numbers that is negative, 0 and positive numbers are put together into a one particular field, and that is called as and that is what is called as integers. Okay, so natural numbers we know starting from 1, 2, 3, 4 naturally existing. Okay, then whole numbers came into consideration. Whole means all, so all numbers 0, 1, 2, 3, 4 is taken here. Integers are both negative, positive, and zero numbers together in here. Then we are going to study about rational numbers. What are rational numbers is what we are going to see here. Rational numbers are numbers that can be written in p by q form. That means the numbers that are usually in the fraction form are considered to be the rational numbers. Whether positive or negative, it does not matter. If it is in a p by q form, it is a rational number. So if I say 3 by 2 is a rational number, yes, it is a rational number. If I say minus 6 by 9 is a rational number, yes, it is a rational number that I have here. Now, any particular thing which is in a p by q form is rational. Now there are some other things that are falling under the category of the rational numbers. Now what are those things? We'll see all of them. All natural numbers are rational numbers. Natural numbers means 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, all of them are rational numbers. Why? If I take into consideration 2 का मतलब क्या है? It is 2 by 1 है. 2 का मतलब अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में लिखना है, it can be written as 2 by 1 here. So I understand that all natural numbers, if I have 169, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 169 upon 1 करके मैं लिख सकती हूँ. So I get an idea that all natural numbers are falling under the category of all natural numbers are falling under the category of what? Are falling under the category of rational numbers. All whole numbers are rational numbers. Okay, before I start with this whole numbers or rational numbers, before I start saying that all whole numbers are rational numbers, one thing that I'm going to see is whole numbers में क्या आता है? 0, 1, 2, 3, 4. हमने अभी देखा 1, 2, 3, 4 क्योंकि वो रेशनल नंबर्स है ये सॉरी क्योंकि वो नेचुरल नंबर्स है, दे आर रेशनल करके हमको इस थियोरी से पता है. ओके, बट इसको कंप्लीट करने से पहले आई गो टू द थर्ड वन. इट सेज 0 इज़ अ रेशनल नंबर. ओके, 0 इज़ अ रेशनल नंबर. तो अब मुझे पता चल गया दिस इज़ डिक्लेयर्ड ऑलरेडी कि 0 एक रेशनल नंबर है. व्हेन आई कम बैक टू दिस वन, all whole numbers are rational. In whole numbers are a combination of a 0 and the natural numbers, isn't it? So we know natural numbers are rational. Natural numbers are rational. 0 is also rational, isn't it? अभी हमने थर्ड उस पर पढ़ा कि 0 इज़ अ रेशनल नंबर. तो अब 0 भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो अल्टीमेटली व्हाट इज़ हैपनिंग? ऑल होल नंबर्स आर रेशनल करके पता चल गया हमको. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड हियर? ऑल होल नंबर्स आर रेशनल करके हमको पता चल गया. ओके, देन आफ्टर दैट वी हैव इंटीजर्स. Now integers में क्या आता है? There is negative numbers, there is 0 and positive numbers. सारे positive numbers natural numbers. 0 and natural number together they are forming the whole numbers. Okay, बचे क्या? Negative numbers. Whole number भी rational है, isn't it? और हमने बोला था कि वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव वो रेशनल कहलाया जाएगा. सो दीज नेगेटिव नंबर्स आर ऑल्सो रेशनल इन हियर. सो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल. ओके, सो हियर अभी मैंने यहाँ पे लिखा वाइस वर्सा इज़ नॉट पॉसिबल. मतलब आई एम सेइंग दैट इंटीजर्स आर रेशनल. ओके, बट not all rational numbers are integers. This way it is not possible. That is with the vice versa thingy. Okay, integer is minus 6 by 12. एक integer है, it is in p by q form, ये rational है. Okay, now I have another integer,
maybe minus 3 by 7. This is a rational number. This is a rational number. Okay, and rational number is not integer. ओके, इंटीजर नहीं है. यहाँ पे -6/12 क्या हो रहा है? -6/12 भी रेशनल है. ओके, -6/12 रेशनल है, -3/7 रेशनल है. ओके, एंड दीज रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स. इंटीजर्स की क्या है? दे शुड बी नेगेटिव नंबर्स or 0 or positive numbers. So if I'm saying -3/7, it is rational. Rational की category active है. Integer की activity not possible here because that does not fall under the category of the integers. This is what we need to understand very well, that an integer can be a rational number. Integer लेंगे -7. -7 को कैसे लिख सकते हैं? -7/1 करके लिख सकते हैं. देखो, एक इंटीजर होते हुए इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू अ रेशनल नंबर. एक्सेप्टेबल. दिस थियोरी इज़ एक्सेप्टेबल. बट व्हाट अबाउट a rational number? Can you write it into an integer form? You cannot write it. So the vice versa thing is not possible. Integer can be rational, but the rational numbers cannot be integers, is what we understand here. Okay, next, decimal number is rational. अब यहाँ पे बोला जा रहा है डेसिमल नंबर के बारे में. सो लेट्स कंसिडर डेसिमल नंबर. व्हाट इज़ अ डेसिमल नंबर? अ डेसिमल नंबर इज़ 2.43. अगर मेरे पास डेसिमल नंबर गिवन है तो मैं इसको रेशनल लिखूँगी. क्या हो जाएगा? 243/100 हो जाएगा, इज़न्ट इट? तो यहाँ पे क्या हो गया? ये एक डेसिमल नंबर था, आई हैव कन्वर्टेड इनटू अ रेशनल नंबर. इट कैन बी अ रेशनल नंबर. ओके, अ डेसिमल नंबर कैन बी रिटन इन अ रेशनल नंबर पैटर्न. ओके, उसके बाद लास्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं. लेट्स कंसिडर परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन रूट. परफेक्ट स्क्वायर इज़ 2 × 2 4. 4 को अगर मैं रूट के अंदर लिखती हूँ, सो इट इज़ सेइंग दैट इट इज़ रेशनल बिकॉज रूट 4 की वैल्यू क्या है? इट इज़ 2. 2 क्या है? नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर रेशनल होता है. हाँ, नेचुरल नंबर विल बी रेशनल. सो अ परफेक्ट स्क्वायर अंडर अ रूट. Perfect square. What are perfect squares that we have? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 and so on. These are considered to be your perfect squares. अब इसको मैं रूट के अंदर डालूंगी तो मुझे आंसर आ जाएगा. That will be a natural number and that natural number is a rational number already. Okay, so this is the introduction of your rational numbers and their categories